After a long hiatus, finally we are back, ladies and gentlemen. Welcome. You are watching the eISL Season 2, brought to you by Notwin Gaming. And last we left off at a very interesting phase where teams just had a number of matches remaining. In fact, two or three at the very max. And this entire week is going to be filled with some amazing action just for you guys. My name is Fixes. I'm joined along with TT. So, how did you spend your vacation? देखिए मैं तो फीफा खेलते हुए टाइम बिताया फॉर श्योर क्योंकि बीच में बहुत सारे लाइक कंटेंट्स की भी कमी नहीं थी फीफा की तरफ से एंड बहुत न्यू कार्ड्स भी आए और मैं तो कोशिश करता रह गया कि मुझे कार्ड्स मिले बट वो मिले नहीं तो उसी के साथ वेकेशन कट गया और बीच में हाँ एक और चीज़ जो न्यू मेसी के बारे में मैं आपको कह रहा था कि मैंने न्यू मेसी ले लिया हालांकि वो टीम ऑफ द ईयर तो नहीं है बट या वर्ल्ड कप का है मेरे हिसाब से जितना कॉइन बना उससे मैंने खरीद लिया. So TT has been up to grinding some new cards, and in fact, he's gotten his team of the tournament, Messi. But yes, for all you new viewers who have tuned in just recently, folks, we've got to tell you, we have to showcase the entire format, how it's panned out, because we, like I said, are approaching the end game, right? The final stages of the league stage, as we have the format right in front of you in just a jiffy. And we can say it all began from the 28th of February and will go on till the 26th of April. And we've almost around completed some 35 plus games and few more matches just remaining. And we've got 11 clubs participating. Every club has 2 players each. And only the 6 top teams will be qualifying for the playoffs. That'll be held from 6th to 7th of May. And whoever wins the 2 players get a chance to play the FGS 2023 play-in tournament. So we also do have E-Nations Cup happening side by side, where we did see our boys from India finally made it there. So yes, kudos to them, and we know they're amazing. They have the talent to shine in the bigger stages, and I'm pretty sure they're gonna do so. But coming down to what's going on in eISL, of course, it's FC Goa that's dominating TT, and there's no stopping them. And I feel they pretty much made it to the playoffs, and they're just gonna be playing for fun. But what's on the line? You must be wondering. A whooping prize pool of 33 lakh rupees, out of which the first position team gets 4.5 lakhs, second gets 2, third and fourth share 75,000 each. जी हाँ फॉर श्योर एंड विद दैट जैसे कि आपने कहा कि एफसी गोवा काइंड ऑफ अपना जगह बना ही चुके और चलिए फिर कहीं ना कहीं वो तो हम लोग देखेंगे वैसे फिक्सेस आई थिंक एफसी गोवा को रोकने के लिए अभी कोई भी टीम तैयार ही नहीं है जिस तरीके से एफसी गोवा अभी तक परफॉर्मेंस करते आए हैं. Yeah, I mean, it's just 7 games played and all 7 matches they've won, right? They are looking nigh unstoppable at this point. Northeast United FC right on their tails, but they, along with Bengaluru FC, whose match we're finally going to get to see, that is going to be a blockbuster. I will, of course, tell you about that. But if you take a look at 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th position clubs, you can see there's not a huge point difference remaining. And like I said, only the top 6 qualify. So Hyderabad FC barely just hanging on the thread over there, and they have to do whatever it takes. Now, when you look at the team, Hyderabad FC, suddenly, you're looking at Genesis, one of the best players, and then you've got Varsi along with it. With him, he's a fighter. But then again, like I said, tonight's going to be a blockbuster, because tonight we have the matchup that you've been waiting for. As we take a look at the schedule, we're going to start things off with Hyderabad FC going up against Odisha FC. Second up, this is the match that I was talking about. This is the match we've all been waiting for. That is going to be Bengaluru FC versus FC Goa. And then we've got, to end things up, ATK Mohun Bagan and Jamshedpur FC. आज के जो मैचअप्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर हर एक क्लब के लिए कि वो इधर जीत के जाए क्योंकि ज़्यादा मैचेस बाकी नहीं है एंड कुछ क्लब्स के बाकी है 2 मैचेस तो कुछ क्लब्स के बाकी है 3 बहुत ही कम क्लब्स है जिनके बाकी है 4 लेकिन आज का जो पहला मैचअप है वो हम लोगों को हैदराबाद एफसी एंड ओडिशा एफसी के बीच में देखने के लिए मिलेगा जिधर सबसे पहला गेम होने वाला है जेनेसिड एंड एटनेट्स के बीच में और जेनेसिड के सामने जब एटनेट्स आएंगे तब सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए बन जाएगा क्योंकि जेनेसिड अपने टीम के लिए शुरुआत तो काफ़ी अच्छे किए थे बहुत ज़्यादा लाजवाब था बट दिन जितना आगे गया थोड़ा सा उनका जो परफॉर्मेंस है
वो डगमगाहट के साथ देखने के लिए मिला, उतना ज़्यादा कंट्रोल में था नहीं। बट ऑन द अदर हैंड 8 मिनट्स की अगर बात किया जाए, वाग्या का तो वाग्या उतना खास था नहीं, लेकिन 8 मिनट्स अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। सो आज ये लड़ाई हो सकता है कि देखने में लग सकता है कि एक टीम बहुत ऊपर है या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और दूसरा टीम बहुत दिन तक कोई पॉइंट नहीं लिए थे। बट राइट। आज वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी ओडिशा एफसी का कमबैक और हैदराबाद एफसी का थोड़ा सा जो है वो डाइसी फेस चल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का ये गेम। Yeah, I think it's a must-win game for both these clubs, right? Especially Hyderabad FC sitting at the 6th position. If they do not win this, and if Odisha FC manage to win this one out, so they'll be getting 8 points. That means they will topple over Hyderabad FC, and now that is a thing for concern, right? Hyderabad FC can still be fine with a draw, but a win nonetheless would even be better. But then again, when you looking at the players of Odisha FC, like you said, I completely agree with you. Nate has been in an impressive form lately. He's been winning his games. He's been doing good. One good news for the Juggernauts is that um, even Vagya's का जो खराब वाला भाग्य था वो थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा है. He's finally starting to win games. He's finally starting to score those winners. So with passing time, things have gotten better. I do not know what they say in your astrological terms, but शायद उनका शनि और भारी नहीं रहा. So he's doing pretty decent. But when you look at, in contrast, when you look at Genesis and Varsi, this is a club that you would say with your eyes closed that it's gonna make it to the top 4. But that hasn't been the case because Genesis, TT, he starts off with a shebang and then suddenly something happens and he tends to concede a lot of goals. And that is where Varsi has always been the hero lately. He's been saving the days. He's in all those big matches. Varsi's been the warrior. So I'm kind of excited about this matchup, to be honest. For sure, but standings अगर क्वालिफाई भी कर रहा है फिर भी बाकी टीम्स के ऊपर, बाकी क्लब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना होगा। बट अभी के लिए बात करेंगे हमारे आज के दिन के पहले गेम की, जो कि अभी शुरू होने ही जा रहा है बस। और देखिए, ट्रॉफी टाइटंस तो आ चुके हैं। रॉबर्टो कार्लोस शायद हम लोगों को बाद में सेकेंड हाफ में दिख जाए, बट जो शुरुआत है वो तो एकदम प्रॉपर पुराने कॉम्स के साथ ही, काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं पुराने टीम के साथ ही होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। Yeah, of course. Not a lot of changes have been made over here. I could see one Eusebio coming on, but that's a birthday icon, Eusebio. So yeah, one of the go-to choices rather. But I was kind of surprised. I mean, I think we did get to see the new trophy titan R9. I think that is something that the players will be after. That card is has literally broken the internet, to be honest. But yes, Hyderabad FC from left to right in the yellow, already building up that attack. But suddenly Odisha FC, in fact, Nate was cautious, and players have gotten a lot of time, right, to work on their mistakes, especially the co-op games. And last time we did have with us, as you can remember, one of our guests coming in, and he shared his his opinions about how the players, the nuances that they kind of think about every little detail, and that really comes into play. But for now, Nate is slowly but surely building up his attack with R9, but Virgil van Dijk comes to the rescue and he saves the day. या शुरुआत काफ़ी अच्छा रहा, और बात कर ही रहे थे तो एक तरफ से तो आ ही चुका है इधर R9 97 रेटिंग, 96 भी क्या कम पावर था विथ 97 फिर क्या क्या होगा वो तो हम लोग को पता चलने वाला है कुछ ही देर के अंदर। बट देखिए, शुरुआत इधर जेनेसिड के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, क्योंकि ओडिशा एफसी, उनके पास तो अभी के लिए क्वालिफिकेशन के चांसेस काइंड ऑफ ख़त्म हो चुके हैं कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 3 गेम्स बाकी हैं, और अगर तीनों में 3-3 करके पॉइंट्स भी आते हैं फिर भी इनका 13 होगा। एंड ऑलरेडी इधर 14 पॉइंट्स के साथ मुंबई सिटी एफसी बैठे हुए हैं। सो क्वालिफिकेशन जो है वो तो नहीं हो सकता, बट कोशिश इधर यही रहेगा कि जाते जाते एक पॉजिटिव नोट के साथ इस टूर्नामेंट को एंड करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हैदराबाद एफसी जैसे टीम को हराना, और हैदराबाद एफसी को अगर वो हरा पाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होगा। हालांकि अभी तक बॉल पोजीशन की अगर बात किया जाए, दोनों ही क्लब्स काफ़ी अच्छे तरीके से बॉल पोजीशन जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, ज़्यादा पैनिक इधर हो नहीं रहे, अपने डिफेंस को स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में मौका मिला ज़रूर, लेकिन वैन डे सार और स्पेशली विथ मेसी, मोस्टली मेसी थे, एंड जो शॉट था वो डायरेक्टली गोलकीपर के हाथों पे। फिनिशिंग और बेटर हो सकता था इधर नेट्स की तरफ से।
Oh yeah, it certainly could have been right the case, and he's been trying to pose that attack, and we've seen, the players are kind of starting it a little slow. It's always difficult when you go up against the likes of Genocid, and we know how aggressive he can be. At the same time, there you go. Oh, a little bit of a miss pass over there, as now Nate has again stolen the possession away. So for Nate, it is a very important game, a very crucial one, because they know that Genocid, there have been a lot of players that have managed to beat him, or maybe just pull out a draw out of him, and then it is Warsiu's been the savior so far for the boys from Hyderabad FC, as again made that important pass with Ronaldinho, trying to get in, trying to find another player. He does find Bellingham instead. Pass back on towards Ruud Gullit with Mbappe has gotten through the defense, and there he shoots and he scores, and just like that, Hyderabad FC, they are already a goal up. क्या शुरुआत रहा है हैदराबाद एफसी की, जिसको लेके डर था कहीं ना कहीं वही हुआ। और ओडिशा एफसी शुरुआती में ये गोल कंसीड कर लेना उनके लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। बट या वी नो कि नेट्स की अगर गेम स्टाइल की बात किया जाए, वो कम बैक कर देते हैं। बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि अगर वो पिछड़ भी जाते हैं फिर भी वो कम बैक कर देते हैं, या तो एटलीस्ट ड्रॉ निकालने में बहुत ज़्यादा काबिलियत रखते हैं। सो लेट्स सी क्या कुछ हो पाता है कि नहीं। बट शुरुआती गेम पे ये तो कह सकते हैं कि गोल बहुत अच्छे से आया, कैपिटलाइजेशन दिखा, एंड बट ओवरऑल पोजीशनिंग के मामले या फिर गेम प्ले के मामले में ऐसा नहीं था कभी भी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर इधर क्रिएट हो रहा हो नेट्स के ऊपर। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गेम पूरा एंड नहीं हुआ है। जब तक एक गोल का फासला है तब तक इधर बहुत सारे चांसेस है कि इधर कमबैक हो जाए ओडिशा एफसी की तरफ से। बट ज़िनेडिन ज़िडान एकदम मिडफील्ड कंट्रोल रखना होगा। बट आज मेसी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पहले शॉट भी लिए, वो भी सही पोजीशन पे नहीं था, पास भी इधर नहीं पकड़ पा रहे। कुछ तो हुआ है जो आज सही नहीं चल रहा। बट उसी के बीच में बेहतरीन एक लॉक थ्रू खिलाया गया था, बट कंट्रोल नहीं कर पाए, और वर्जिल वैन डाइक तो मौजूद थे ही। Yeah, I think one of those things that we've seen has been an issue going on with Nate. He has to find some another, kind of a pass, some another way to just break in, to breach through the defense of Genocid, which, a lot of players have done. But this time, Genocid looks solid. An impressive performance even in the E-Nations Cup. And we know this player, he can do wonders, right? Even the likes of Genocid, even Saki, both Saranch and Charanjot. We've seen the usual faces now just finally, popping up for us. But Hyderabad FC, this time, changing the wings, going through that right-hand side. Good pass on towards Ronaldinho. Ball still in possession of Hyderabad FC. And all right, some quick flurry of passes that we can witness. But Maldini, he comes for the rescue. And we have seen the new Maldini card, right, has been a go-to choice. Instead of Adam Militao, you can pair him up with Virgil van Dijk. But a little bit of a pace coming in from the left back Maldini that we have to Eusebio, given towards Zinedine Zidane. And back and forth passes. This could be really nice. But Virgil van Dijk not really moving away from his marker and making sure that the ball does not pass through. Yeah, but देखिए अभी भी वो तोड़ नहीं पाए डिफेंस को। बात करें फाइनल, ओह नो, इधर ग्रीन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं अटैकिंग थर्ड के ऊपर। थोड़ा सा और ज़रूरत है कि वो क्लिनिकल रहे और थोड़ा शांति से एक बिग ब्रेथ ले, एंड डीप ब्रेथ लेने के बाद जाके कहीं ना कहीं जो है वो खेले, क्योंकि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, उनके पास चांसेस 3 बने थे जिसमें से एक भी गोल स्कोर अभी तक हुआ नहीं है। बट उसी के बीच में काउंटर भी दिख रहे थे इधर हैदराबाद ऐसे जेनेसिड, बट वो हो नहीं पाया। बट जो पहला हाफ था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गया। ओडिशा एफसी ने कोशिश तो पूरा किया। देखिए 3 शॉट भी लिया गया था उनके तरफ से, और ये तीनों के तीनों शॉट्स लेने के बावजूद, शॉट एक्यूरेसी इधर 2 शॉट ऑन टारगेट रहने के बावजूद भी एक भी गोल नहीं आया, जिधर से एकदम क्लियर गोल आना चाहिए था। बट आई थिंक मुझे लगता है कि नेट्स को थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा होल्ड करके खेलना चाहिए। जल्दबाजी करेंगे फिर तो प्रॉब्लम होगा।
Yeah, I think Nate had to play a lot on those counter attacks, right? We've seen all the chances that came out of Nate did emerge from Genesis trying to attack, and then suddenly the ball getting stolen, and then he runs, utilizes his wings a lot. But in the second half, we're gonna see a lot of those formation changes coming in. And am I reading that right? Is it Atal that has been brought up? And yeah, one of those cards, I think it was recently uh, there where you could one of he plays on a left back position. For that, I'm sure he did get a few upgrades or something. Quite expensive, around 200k to 300k. But considering the fact you've got the likes of Theo Hernandez and Alfonso Davis, I'm starting to wonder why would you go for a CDI player. But now look at Genesis Oh, again getting a nice shot, but still this time somehow Nate looking for a counter yet again. Now this is how Nate has been trying to build up his plays. As you can see, he's trying to find out that pass, but nobody not the left backs, not really overlapping or taking a run over there. As a result, did not have a lot of passing options, so have to play box to box. Wanted to go for a reverse elastico and lost the ball, but eventually found it back. A pass again back towards Eusebio, and now a little bit of a room with oh, R9. Wanted to take a shot, but you know who's there in front of him. या विद दैट इवन लाइक उनके जो फुल बैक्स है वो ओवरलैप नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी बीच में वो कोशिश था, वो बना भी रहे हैं अटैक। इससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि जेनेसिस के जो डिफेंस है वो भी उतना खास अभी है नहीं। तोड़ा ज़रूर जा सकता है, लेकिन वो तोड़ने के लिए थोड़ा होल्ड अप करके टाइम टू टाइम प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ इधर पासिंग करना होगा, अगर आप एकदम सेंट्रल खेलना भी चाहते हैं तो वही चीज़ अभी कोशिश किया जा रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जेनेसिड की अगर बात किया जाए, उनका काउंटर अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उससे बचने के लिए मे भी हो सकता है कि जो उनके फुल बैक्स हैं उनको अभी पीछे रखा जा रहा है। तो देखना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ते। बात कर ही रहे थे, उसी के बीच में एकदम राइट हैंड साइड से हकीमी ओवरलैप पे निकल चुके हैं, और उसी जगह पे माल्डिनी की तरफ से एक बेहतरीन टैकल जाता हुआ, जिसके थ्रू बॉल फिर से आ चुका है ओडिशा एफसी के पास। नेट्स लेफ्ट हैंड साइड से पूरा कोशिश, सबियो क्या वो इधर से ये पास निकाल पाएंगे? देखिए अभी तक का फ्लैंक उतना ज़्यादा यूज़ हो नहीं रहा था, बट फाइनली हुआ, लेकिन ये गलत पास। बेलिंगम मौजूद थे, उसके बावजूद इधर एक पास देने की कोशिश किया गया लेफ्ट विंग के ऊपर, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक बार फिर से कहने की बॉल आ चुका है इधर हैदराबाद एफसी के पास। सो ओडिशा एफसी की अगर बात किया जाए, कहने की थोड़ा क्लिनिकलनेस कम हुआ है, जिसको अभी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। I'm kind of wondering where is he playing Yusuf Atal as he's ideally right back, and that too well just hold on as Ronaldinho scores, and there you go, nice passing going on between Genesis players as it was quite open. The defenses did not bother him much, did not have to go for any skill moves, and just like that he scores a goal. And I was kind of it was just going on in my head. So it's a 5-4-1 formation, and he's playing Atal on it's the left back. So interesting, to be honest, because on a left wing back position rather. So I'm kind of wondering how is he going to get the chem out of him, because initially I thought maybe a Serie A player. So not in fact a Serie A player. My apologies, a League One player. So could gel up very well with the likes of Mbappe and the rest, right? But then I saw that he's on a different position altogether, and when you've got a lot of options on your left back, I'm starting to wonder why did he Yeah. opt for this certain card. Could have come the meta, but whatever it is, I mean, he's winning right now. This is the point where we see that Genocide is going to make a few changes. Maybe he's still on a 5-4-1. I don't think he's going to change, but it's going to be Nate, I think, who goes for the change. We might get to see 3-4-3 or maybe a 4-2-4. Get those, get those constant press up. Maybe PAPLs going on right now. A lot could be happening. जी हाँ, अभी देखिए 70 मिनट का गेम कहने की ऑलरेडी व्यतीत हो चुका है, जिधर इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का गेम बाकी है। ज़ार्ज़ीनियो इन, डे ब्रुयने इन एंड डेविस को लाया गया है। और देखिए इधर अभी तक जो प्लेयर्स थे उनको लेके मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा प्रॉब्लम था। लाइक प्लेयर्स फ्रेश लेग्स तो लेके आएंगे ऑब्वियसली, जिसके थ्रू थोड़ा पेस मिले,
लेकिन इधर थोड़ा बहुत ज़रूरत है फोकस और करने की, बट हालैंड ओके। सो फाइनली विसल बजने वाला है, रेफरी की तरफ से फाउल था जिसकी वजह से फिर से एक बार बॉल कंट्रोल रहेगा नेट्स के पास। ओडिशा एफसी 2-0 से ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं हैदराबाद एफसी से। हैदराबाद एफसी के पास हालांकि अभी भी मौका है कि वो इधर टॉप 4 पे अपना जो जगह है वो बनाने की कोशिश करे, जिसके लिए उनको थोड़ा लक की भी ज़रूरत होगा। बट लेफ्ट हैंड साइड से थियो हर्नांडेज एज ऑफ नाउ इस गेम के अंदर लक की नहीं, इस गेम के अंदर ऑलरेडी वो राज करते हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ 14 मिनट्स एंड जो रिजल्ट है वो हैदराबाद एफसी की तरफ आता हुआ दिख सकता है इस मैचअप के पहले गेम का। एक और मौका बन रहा था, एम्बापे टू रोनाल्डो कोशिश किया गया, लेकिन उसी के बीच में एक इंटरसेप्शन, बट इस बार बहुत ही जल्दी रैपिडली काउंटर पे आ चुके हैं एम्बापे ऑन द अदर एंड, लेकिन नहीं, फिनिश अकेले ही करेंगे विथ हॉलैंड और उसी के साथ 3-0 और कोई भी कमबैक का चांस है ही नहीं इस गेम पे। Yeah, there's no stopping Genesis. Today we saw a more controlled version of Genesis, where we did not see him just pushing in through, get a lot of men above, try and do something flashy. He's kept things really simple, and well, that has been working out for this lad who was already qualified for the Nations Cup, and we know how good of a player he is. Apparently, 3-0 up already. Genesis. For the Hyderabad FC fans, everybody's going to be happy, as he wanted to build up another attack. But finally, a sucker punch to Nate, to be honest. He'd broken free with Mbappe, but the ball gets stolen away. And this is what happens when you go completely aggressive, right? And with KDB, a pass on towards Mbappe, might steal one, but overthinking. And that is going to hinder him from scoring a goal, as barely just 6 minutes remaining. I think it's already written in the books that Hyderabad FC, they've won the first match. Yeah. क्योंकि जो कमबैक्स अभी तक दिखे हैं उस पे एक अलग कहने की शार्पनेस था, बट इस गेम के ऊपर अगर बात किया जाए, मौके कम मिले नहीं है, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिले, बट कन्वर्जन नहीं देखा। एक बार फिर से मौका, इस बार गोल पे ही नहीं रख पाए। आज हुआ क्या है नेट्स को समझ में अभी हम लोगों को भी नहीं आ रहा कि वो क्यों फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस जिस जगहों पे उनको बॉल मिला है, इवन स्टार्टिंग से जिस जिस जगहों पे उनको बॉल मिला है, शायद वो लीड पे भी रह सकते थे अभी हैदराबाद एफसी के ऊपर, बट वो नहीं हुआ। और हैदराबाद एफसी जस्ट 1 मिनट, और इधर जेनेसिस को देखिए, वो तो एंजॉय कर रहे हैं। Yeah, could be looking at his 4th goal, and there you go. Oh, there you go. No problem at all. Nate is furious. He's frustrated. Something and everything has gone wrong for him. We could see when he was just forcing those slide tackles there, and even charged his keeper so ahead, and showing no remorse over there, no mercy. Genesis, clinical finish. And very calm and composed one that did not panic under pressure at all. And then, at this point, Nate had pretty much given up. The final whistle gets blown, and Hyderabad FC win the first matchup 4-0 to be the scoreline. The first half was quite kind of competitive, but Genesis still managed to find a few goals through. And then we thought maybe the second half could be Odisha FC's half, but that was not the case. Genesis FC, he was quite patient with his build-ups. He was not making a lot of mistakes. We've seen Genesis to be opening things up in, getting opened up in his defense, a little vulnerable over there. And today also we did see those few cracks, but we could not see Nate to be capitalizing on it, right? We saw at a point the pressure was such that Genesis in fact, Nate started thinking his decisions. There were moments where he was kind of making those extra passes, which was kind of not necessary, right? And then we could see those sucker punches coming out of Genesis every single time, punishing out of Nate's attack, goes on a counter and scores a goal. Yeah, I think जिस तरीके का परफॉर्मेंस इस बार इस गेम के अंदर ओडिशा एफसी की तरफ से गया है, उसका झलक हम लोगों को शायद कोऑप पे भी देखने के लिए मिले, क्योंकि नेट्स देखिए पहला गोल कंसीड उन्होंने जरूर किया, उसके बाद उनको 2 गोल बैक टू बैक करने का मौका मिला था, बट ये तो सेकंड गोल है हैदराबाद एफसी की तरफ से, और रोनाल्डिनियो एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे
इधर फिनिश ऑफ किए, जिसपे गोलकीपर के पास तो और कोई भी मौका था नहीं। और या ये अगर जैसे कि एडरसन की अगर बात किया जाए, उनके पास वो 99 रिफ्लेक्सेस हैं, बट वो 99 रिफ्लेक्सेस वैन डे सार के पास नहीं है। तो इसी वजह से ये जो ग्राउंडेड शॉट्स है, इसको पकड़ना बहुत टफ हो जाता है उनके लिए। और हालैंड की तो क्या ही कहना, हालैंड जब आते हैं तब वो इधर भी गोल करते हैं और रियल लाइफ में तो करते ही करते हैं। तो लाइक ऐसे जो गोल्स हम लोगों को देखने के लिए मिला है, जेनेसिड जब जब गोल किए हैं वो तब कहीं ना कहीं बहुत बार हम लोगों को देखने के लिए मिला है काउंटर पे। एंड आई थिंक ये जो आखिर के 2 गोल्स थे वो काउंटर पे ही हम लोगों को देखने के लिए मिला था। तो जेनेसिड को रोकने के लिए नेट्स का एक पूरा स्ट्रैटेजी चल रहा था फर्स्ट हाफ के ऊपर, कि वो थोड़ा सा होल्ड गेम प्ले दिखाए और थोड़ा सा उनके फुल बैक्स को पीछे रखे। बट देखिए स्कोर कार्ड की अगर बात किया जाए, 4-0 के साथ जेनेसिड इधर जीतते हुए दिखे। और आई थिंक मैं तो कहूँगा कि जेनेसिड बहुत खुश थे एंडिंग के टाइम पे, क्योंकि उनको भी पता था, खुश या फिर हम लोग कह सकते हैं वो थोड़ा हंस रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था जो मौके नेट्स को मिले थे अगर वो कन्वर्ट कर देते तो शायद उनके चेहरे पे वो हंसी ना रहता एंडिंग के टाइम पे, क्योंकि 3-4 मौके थे जो कि गोल हो सकते थे। Exactly, that is what I'm talking about, right? And we could see that even genocide in the first half, the possession and the passing, everything for Odisha FC was slightly more than Hyderabad FC, and it felt like that it is going to be an even competition. Nate is going to score a few goals up, but look at the goals that Nate has conceded, right? You could see his defense in every single one of them has been all over the place. Just barring the first goal where he just slightly managed to cut through the defender. Every other goal that was scored, right? That is where things really got awry. But unable to make a good save in his keeper. But you know what? We got a few saves that were made that were impeccable. Sometimes would blow up your mind. So let's take a quick look at the past week's saves of the day. All right, so we started off. This one was a matchup where Beno 7 wanted to hit through Crusher, but look at that. Wow. Yes, मुझे भी लगा था शायद हो जाएगा. Wow, what a pass towards Pele. Oh no. A player lock on towards MP, passes on towards Pele, takes a shot. बहुत पहले से नाडी भी ऑफसाइड पोजीशन पे मौजूद थे, तो ये कभी-कभार हो जाता है. Wow. All right. The first one, that completely just blew my mind. And Krasha, how he does it, we don't know. And Beno 7 must be really frustrated with what was happening. But coming back to this particular game, right? Especially look at that second goal. Nate's defense, I don't know what was happening. Maldini was way behind, just standing beside the keeper, giving a free room for Genesis to score, and he says thank you sir for this opportunity, and he scores. And the next ones did just come on counters where well, to be honest, you can't blame Nate for that, because in those moments you kind of tend to go a little higher up, you kind of tend to get your players up there, you want to score a goals, and then you get hit on the counter, so can't really help you, can you? नो या कभी कभार देखिए ये प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा कि एंडिंग तक आपका जो है उतना मौका ही बचता नहीं है, और आपका तब ऐसा पोजीशन होता है जब आप ऑलरेडी बहुत सारे गोल्स कंसीड कर लेते हैं। तो काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि उनके लिए कुछ करने के लिए था नहीं, उनको जाना पड़ता, लेकिन उसके पहले उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था जो कि उन्होंने किया नहीं था। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है कि ओवरऑल गेम के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक इतना टाइम उनको मिला था। कभी कभार क्या होता है कि टाइम मिलने से आपका गेम पटरी पे आ जाता है, कभी कभार टाइम ज़्यादा मिलने से आपका जो फ्लो है वो टूट भी सकता है, तो वो शायद फ्लो थोड़ा सा जाता हुआ देखने के लिए मिला है। बट या पहला गेम था, इसके बाद एक कोऑप मैच भी है। आशा करता हूँ कि कोऑप मैच पे बहुत ही अच्छे से खेलेंगे, क्योंकि फिनिशिंग छोड़ के काफ़ी अच्छे खेल रहे थे। नेट्स की अगर बात किया जाए, उनका फिनिशिंग प्रॉपर ऑन टाइम नहीं था, बट जो मेकिंग था, जो अटैक मेकिंग या फिर जो जिस तरीके से वो बना रहे थे पूरे गेम को, वो काफ़ी अच्छा था। तो उस जगह पे अगर नेट्स इधर बनाते और वागिया फिनिश करते, देन मुझे लगता है कि कोऑप पे कुछ अलग एक स्पार्क दिख सकता है ओडिशा एफसी की तरफ से। बाकी उनके ऑपोजिट पे आने वाले हैं कौन? हैदराबाद एफसी, जिधर हम लोग को वॉर्सी एंड जेनेसिड दो एक साथ आते हुए दिखेंगे। क्या क्या कमबैक करके रखे हैं ये, फिर तो प्रेशर ऑलरेडी ओडिशा एफसी के ऊपर है और उसका प्रेशर तो और बढ़ जाएगा। एक्साइटेड तो हूँ मैं बहुत ज़्यादा।
Exactly. Excited you are very much. I'm in a panic attack right now because Juggernauts last season also they could not make it to the playoffs, and this season also things aren't really looking sunny for them. And this is Hmm. literally a must-win game for them, to be honest, because if they lose this one, they're gonna lose out on 3 points, and then they'll have just 2 games remaining, and I don't think much can happen in those two. So hence the frustration coming out of Nate, which was quite visible for us, right? We could see him not being happy with the way he's been playing. Some things aren't going his way. But folks, we are back again with the co-op matchup starting, and it's going to be Genesis and Warsi representing Hyderabad FC from left to right against Nate and Bhagya from right to left in black for Odisha FC. And right off the bat, we see that Genesis and Warsi they intend to show, or rather try and score a goal, just trying to capitalize those wings, but also in a way, but no, cannot lose the ball like that on the midfield. हम्म ये उधर से डायरेक्ट कोशिश था कि एक शॉट ले ले, वैसे वो शायद मिस प्रेस हुआ होगा जिसकी वजह से वो बना. बट हाँ, आपने एकदम सही कहा कि एटलीस्ट कोऑप पर तो आप बॉल मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कोऑप पे गोल स्कोर करना बहुत टफ है. आप एक बार के लिए एक गलती कर दोगे, गोल कंसीड कर लिया, फिर उसके बाद उसको इक्वलाइज करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है. बट इसी के बीच में ओडिशा एफसी कोशिश उनकी तरफ से था कि वो एक अटैक बनाए, जो कि बना भी रहे थे, लेकिन एक मिस पास, बेलिंगम के इंटरसेप्शन, एंड अभी के लिए काउंटर पे हैदराबाद एफसी. फाइनली ज़िनेडिन ज़िडान. और देखिए ज़िडान भी हम लोगों को अभी गेम में बहुत ज़्यादा आते हुए देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ट्रॉफी टाइटन्स पे उनका भी 97 रेटिंग कार्ड आया है. तो हम लोग मिडफील्ड पे तो दिखने वाले हैं, क्योंकि फिजिक जिस तरीके के है, ड्रिबलिंग भी है एंड उसी के साथ शॉट पावर भी है. सो बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिख सकता है हम लोग को ज़िनेडिन ज़िडान. Yeah, no doubt. I mean, just the agility, you can just boost it with those chems, right? But regardless, I think one other thing that we can talk about over here is the fact that Odisha FC, they've been pressed over. Hyderabad FC have been stealing those balls in those crucial areas, and you can see Mbappe is already gone for a run, and now a pass to R9 could seal things through, can get them the first goal, but rather goes for a pass there on towards Ronaldinho. A very cheeky affair, but Mandasa saves the day. And these are the things. It's so difficult to coordinate with each other during those co-ops. And even Dugal said how hard it can be, and you have to just talk it out amongst your players. You have to keep boosting each other up, and especially when Nate is not in the best of minds, it has to come down to Bhagya to support him, to kind of constantly just propel him to do even better, because for Odisha FC, they cannot really afford a draw at this point. Also, they have to get a victory, and otherwise their dream of playing in the playoffs will just turn into nightmares. At this point, tried some loose passes, but still the ball being retained with Zinedine Zidane. Now this is the control that we are talking about. You sort of get with Zidane, but now Hyderabad FC, they're on an attack of their own, and trying to go through the left wing. Got Bellingham. Oh, that's nice maneuver coming in, but a little too many. Head stop. ऑलरेडी हैदराबाद एफसी एक गेम जीत के बहुत ही अच्छे स्टेज पे, एंड वो भी बहुत ही कुशनी एरिया से जीते थे. और इस गेम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल दिख रहे हैं, एंड स्पेशली उनके तरफ से जो मिड प्रेस हो रहा है, एकदम मिडफील्ड से प्रेस करते हुए दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑन पॉइंट देखने के लिए मिला है. बट फाइनली राइट विंग से मेसी के लिए बॉल निकाला गया था टुवर्ड्स रोनाल्डो अपना वो शॉट लिए ज़रूर, बट डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा, जिसकी वजह से गोल तो नहीं मिलेगा. बट बहुत ज़रूरी है ओडिशा एफसी को कि जितना जल्दी हो सके वो एटलीस्ट इधर से एक गोल दाग दे. मौका, बहुत अच्छा मौका, और फिनिश भी होगा लेफ्ट ऑफ कॉर्नर पे विथ मार्टिनी. इसके पहले एक बार हम देखे थे कहने की ट्रेवेला, और इस बार एकदम सीधे शॉट के साथ. इससे ही पता चलता है कि मार्टिनी का जो शॉट पावर है, जिस जगह से आप ले रहे हो उसका फायदा आप उठा सकते हो और आप गोल भी दाग सकते हो. तो फाइनली ओडिशा एफसी बैक ऑन ट्रैक.
Yeah, it's one of the latest Maldini promos, right? The foot birthday icon Maldini, and the moment I saw that 95 on him, I was pretty sure that a lot of pros are gonna use that, and hence we could understand why we've seen Maldini scoring Trivelas, and this was, I think, you could say a much more easier goal for him, considering the goals that he has scored. But yes, a goal that Hyderabad FC did not see coming. Odisha FC on the corners really sharp, and they need chances like that. A few more, and they might be good to go. And at this point, they've got all the options to kind of play things slow a little bit, let go through the first half with even a 1-0 lead, even can manage to score one more. That would really help them out. But switching the play, and now they are starting to control the possession, starting to control the midfield a lot. And Hyderabad FC, they're not forcing for those challenges, right? They're remaining pretty chill, pretty calm. They're just letting Hmm. Odisha FC, make one of those missed passes, or a quick pass that they can intervene and take the ball away. They're doing something like that. Look at that. Nobody is really going for the ball. It's just Odisha FC trying to establish the dominance in the midfield, and that's what's happening right now. Yeah, and मेनली आई थिंक ये कुछ देर के लिए और कैरी फॉरवर्ड भी होता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद क्या देखिए, मेन चीज़ क्या है कि हैदराबाद एफसी की तरफ से मिडफील्ड से बॉल तो छीना जा रहा है, लेकिन वो बाद में जाके हो नहीं रहा। कहने की फिनिश तो इधर थोड़ा देख के खेलने की ज़रूरत है। और वॉर्सी और जेनेसिड, आई थिंक जितना टाइम उनको मिला था उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा एक साथ, क्योंकि देखिए इधर ओडिशा एफसी के पास हो सकता है कि ज़्यादा कुछ है नहीं पाने के लिए। वो अभी अपने प्राइड के लिए खेल रहे हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं, उसी के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस के लिए खेल रहे हैं। लेकिन हैदराबाद एफसी के पास बहुत कुछ पाने के लिए भी है, बहुत कुछ खोने के लिए भी है। तो अगर वो इधर से बेहतर खेलेंगे, अगर जीतते गए, तो शायद वो इधर टॉप 4 पे भी अपना जगह बना सकते हैं। तो कोशिश वही करना होगा कि वो जितना ज़्यादा बेहतर हो सके वो परफॉर्मेंस डिलीवर करे। एज ऑफ नाउ 7 पॉइंट्स है इधर से लेके इस मैच को इंक्लूडिंग, अगर 3 गेम जीतते हैं तो वो 16 पॉइंट्स तक भी पहुंच सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। बट अभी के लिए म्बापे को देखिए, एक बार इतना ड्रॉप डाउन करके डिफेंस करते हुए नहीं देखा मैंने, लेकिन मौका बना था बट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पाए। वैसे डिफ्लेक्शन अगर नहीं रहता तो शायद वैंडेसार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसना पड़ सकता था इधर। Yeah, but to be honest, both these clubs have a lot to lose on the line. To be true, because yeah, Odisha FC might not be at the best of positions, but imagine them getting a win. If they can win the co-op, and if they go on to win the individual matchup where Bhagya bests out our lovely Varsi, then Odisha FC get 3 points. Now this kind of changes the dynamics in the overall standings. So what will happen then is that Odisha FC take on the 6th position, and Hyderabad FC will be on a back foot. So they'll be just hoping that ATK Mohun Bagan loses their game. Same with Kerala Blasters, East Bengal, and Jamshedpur FC also. And then maybe their chances of making it to the playoffs will still remain. But if Hyderabad FC win from over here, then they would build a little bit of a better cushion for them. They'll be sitting at 10 points, so their endeavors also to qualify for the playoffs will look more solid. So kind of a must-win game for both these clubs, and well, that was quite ambitious, to be honest, from Odisha FC. As a result of which, commencement of the second half and offside. बहुत कम टाइम देखे हम लोग ऐसे, स्टार्टिंग नहीं जस्ट ऑफ साइड के साथ शुरू होते हुए। बट या बहुत एग्रेसिवली इधर अटैक पे जा रहे थे, जिसके वजह से कहने की शायद हुआ होगा। बट इस बार हैदराबाद एफसी की तरफ से बॉल कंट्रोल काफ़ी शानदार दिखते हुए, एंड जस्ट अटैकिंग थर्ड पे 1-2 पास एंड उसी के साथ शॉट लेने की कोशिश था। बट लेफ्ट पे ऑलरेडी आई थिंक पेले हैं जो होल्ड करे, या फिर सभी हो, तो वो तो एक बार देखेंगे। आई थिंक सभी है, उनके पास अगर पास देते तो शायद और भी ज़्यादा क्लियर एंगल मिल सकता था। हालांकि उतना जल्दी करना वो बहुत टफ है। हम लोग तो इधर बैठ के बोल रहे हैं, लेकिन उधर जस्टिक लेके करना बहुत सारा टफ हो जाता है। सो देखते हैं अभी इसके बाद क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं हैदराबाद एफसी, क्योंकि हैदराबाद एफसी अभी तक तो पीछे है और गोल आने के आसार उतने खास दिख नहीं रहे। Yeah, but one good thing about Odisha FC that I've liked is this time the defenses are pretty tight. As you can see, they're not keeping the defenders all over the place. They're marking the players properly. They're reading the runs. And this time, however, look at that. Look at that. That could be one of the
best defensive plays. Maldini just comes out of nowhere and takes the ball away. And Odisha FC, I think they've been really good on their defense in the sense that I think they're playing 4-3-2-1. If they are, they've given that instruction even for your center forwards to come back while defending. So that we have seen that happen from their side. And I think one of those interesting things that we have noticed is that what happens is Odisha FC, they've been trying to utilize the element of surprise in their favor, right? And I think the first goal that also came, this is something that Hyderabad FC were not hoping for. I think something similar these boys have been trying to do in the second half, and did not succeed. But now Hyderabad FC is slowly but surely starting to take over. Oh, Nice defending again from Odisha FC. लाजवाब डिफेंडिंग। पिछले गेम पे 4-0 हारने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेके उतरेंगे कोऑप गेम के ऊपर, क्योंकि बीच में मौका Wow! Wow! सेकंड गोल, व्हाट अ गोल! ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा स्मूथली इधर करते हुए लिखे, और उसके बाद फिनिशिंग, वो एक एक्स्ट्रा पास, सब कुछ मानो कि बटरी तरीके से हुआ। और उसके बाद ये जो लीड बना है 2-0 का, इसको तोड़ पाना एंड इधर से कम बैक कर पाना हैदराबाद एफसी के लिए बहुत बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि अभी तक तो वो सही से अटैकिंग थर्ड को ही जो है वो एक्टिव नहीं कर पाए अपने। तो जब वो एक्टिव ही नहीं कर पाए, फिर उसके 30 मिनट के अंदर अंदर जाके 3 गोल स्कोर करना और जीतना, वो तो पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा। बट हैदराबाद एफसी इसके पहले कमबैक तो किया है, लेकिन जिस तरीके से ओडिशा एफसी ने इस गेम के ऊपर अपना प्रदर्शन दिखाए हैं, उससे ये चीज तो पता चल रहा है कि यस, वाग्या और उसी के साथ नेट्स का जो एक प्ले मेकिंग है, वो दोनों जब पंच हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब वंडर्स करके जाता है। हालांकि वाग्या के सिर्फ वाग्या नहीं, उनका स्किल्स इधर दिख रहे हैं, क्योंकि वाग्या तो उनका उतना कुछ साथ था नहीं इस पूरे टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में। Yes, but अभी चीजें सुधर रही है, अभी चीजें अच्छी हो रही है, and Odisha FC, this was a beautiful goal, very well orchestrated, nice passing between the players, and we know Eusebio, if he gets the ball and if he takes a shot, I think 99% of the chance it goes in. And this time, even Dugal had come in, he's told us how how OP the driven shots are, and so difficult, and especially if you're playing Van der Sar, you would need somebody like Edison Morris to just defend those driven shots. He has those fast reflexes, but this time I think Hyderabad FC have to go full out. And now this is one of those situations they never thought that they would be in, but the resiliency shown in by Odisha FC getting Eric Cantona, so a lot of Man U fans would be really happy seeing this player. And I was even wondering, a lot of players aren't using this card, has got some amazing shooting abilities, could be really helpful even in the midfield also. But right now, Hyderabad FC building up for that cutback, and a shot, a beautiful one, just piercing through the defenses, and Odisha FC suddenly in a whole world of pressure at this point, because we have seen this happen. We have seen this happen so many times in this season, right? Suddenly a team is 1 goal ahead, and then they, in fact, 2 goals ahead, and then suddenly they concede a goal, and the second one also comes really quickly. But the sheer cojones on Hyderabad FC, look at how tight the Odisha FC's defenses were, but still they managed to find a cutback over there. Worth applauding, and Hyderabad FC, they are right back into the game. हाँ, और इस गोल के पीछे एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण था कि वो जो पास है वो एकदम एंडिंग में जाके बैक लाइन के पास से दिया गया था। इसके पहले जितने भी पासेस हम लोग देख रहे थे, जो स्मॉल बॉक्स है उसके आसपास जाके डी के अंदर जाके जस्ट पास देने की कोशिश करते हैं, जिसमें डिफेंस लाइन के पहले से हो रहा था। बट इस बार डिफेंस लाइन को पीछे छोड़ा, आगे गए, देन जाके पास दिया, जिसकी वजह से इधर बॉल जो है वो बहुत अच्छे से बनता हुआ दिखा। लेकिन शुरुआती में ओडिशा एफसी थोड़े जल्दबाजी पे कि आए बॉल और लेके घुस जाएंगे गोल पे, बट वो होता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे प्लेयर्स भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता शुरुआती में। तो वही हुआ, बॉल अभी गया हैदराबाद एफसी के पास। तो देखिए, बीच में जो हम लोग बोल रहे थे, बट एम्बापे इतना ज्यादा ड्रॉप डाउन करते हुए बहुत कम देखा गया है, बट बार बार एम्बापे को लेकर ड्रॉप डाउन किया जा रहा है डिफेंस पे। Yeah, it's fine, as long as you can get the ball up. And then
It's also okay in the sense that the substitutes that these players have. Well, what do you say about that? But Hyderabad FC again looking really deadly on an attack, but this time Ashraf Hakimi just being present over there, making sure that the ball does not pass through. And Odisha FC at this point, I think it would be better that they score a goal. And what changes have they made? They've gone for a 4-4-2. They've been sticking to that. A few players bought in. We've seen Cantona right from the start. Now, I think at this point, you're going to go ultra defensive. You're going to have 5-4-1, or and then you get a few fresh new legs up, right? So, we're still in pursuit of watching Cafu make his entrance. Because come on, it's a new promo card. I'm pretty sure the players would also want to try their hands on it, and we would all love Cafu. We are all Cafu fans. Yeah. We've seen the wonders that he's done in during his prime days. But yes, it's up to the players. But a very interesting match going on because Odisha FC cannot afford to concede a goal at this point. क्या क्योंकि देखिए शुरुआत पे वो एक गेम हार चुके थे, इधर वो 2-0 से आगे थे, और इस पे कहने की मैं तो कहूँगा कि हैदराबाद एफसी थोड़ा सा जो है वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से हो रहा था कि वो डिफेंस पे जो है डिफेंस को तोड़ नहीं पा रहे थे ओडिशा एफसी के। बट जब इधर थोड़ा मतलब बहुत ही स्लाइट चेंज, एक्स्ट्रा रन वो जब निकला, वो भी जस्ट कुछ मीटर्स का, और उधर ही जाके सब कुछ बदल गया। और एक बार फिर से देखिए बिल्डअप पे पहुंच चुके हैं, बट इस बार माल्डिनी, लेकिन फिर भी बॉल कंट्रोल रहेगा हैदराबाद एफसी के पास। और फाइनली हुलीत बॉल जितना ज़्यादा हो सके ओडिशा एफसी अपने ही पास रखना चाहेंगे, क्योंकि इधर से बॉल लूज करना दैट मीन्स आप हैदराबाद एफसी को आमंत्रण दे रहे हो कि आप आओ और गोल स्कोर करो, लेकिन उसी के बीच में मौका बेहतरीन क्रॉस, वाओ! उसी के साथ गोल। व्हाट अ क्रॉस दिस वाज, ओह माय गॉड। जिधर हम सोच रहे थे हैदराबाद एफसी की कमबैक के बारे में, जिधर हम देखते हैं रोनाल्डो को फिनिश करते हुए, उधर रोनाल्डो अपने राइट फुट से क्रॉस दिया और हुलीत का फिनिशिंग। व्हाट अ गोल। Oh my goodness. Oh my goodness. This is exactly what the Odisha FC, the juggernauts, needed. And could be another one going in through with R9. And you could see finally Ned happy. And the sparks just getting ignited for Odisha FC. They have a chance to turn things around, at least in the third battle, because this was a goal at a very crucial moment, and did not have to concede one anymore. And at this point, they could just pretty much hog on the ball. Got a little out of hand there, but it's fine. It's fine. Back to safe hands of Andasa. But at this point, TT, I don't see Hyderabad FC winning this one. I mean, 2 minutes remaining. They've got to score 2 goals, and it's all right. I think maybe could try to score 1 at least, but no, that's not gonna happen. And at this point, they're gonna try and make these long plays happen multiple times. So one thing we have seen Odisha FC they have done is those crosses, right? They've been going for those long plays, and now this is. With my eyes closed, I can say it's Ned. Because he's done that even in the previous game, and he's done that even now, showing that aggression there. But regardless, guys, we've got a game on our hands right now because Odisha FC have won their co-op match. It's a 3-1 scoreline, and they're going to be really happy about it because now it has come all down to the showdown between Varsi and Baghdad. क्या शानदार ये मैच था, और ओडिशा के वासियों आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि आप आ चुके हैं फिर से गेम में वापस, और वापस भी आए हैं एकदम स्टाइल पे। जिस तरीके से गोल स्कोर किए गए हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार था। एंड स्पेशली अगर बात किया जाए जो चीज़ें अभी तक इस पूरे eISL सीजन 2 के अंदर एक्सप्लोर होता हुआ नहीं दिखा है, स्पेशली ये क्रॉस को गेम पे हम लोगों को लेके आते हुए देखने के लिए मिले हैं, जिसका प्रॉपर फायदा मिला। और ये गोल तो क्या ही लाजवाब था। एक एक्स्ट्रा पास की जरूरत था हुलीत के साथ, हालांकि वो फिनिश करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करने के लिए उन्होंने जस्ट एक एक्स्ट्रा पास किया, और उसके बाद हमने देखा 2-0 से आगे निकल गए थे। लेकिन ये था वो जगह जिधर हैदराबाद शायद सेम चीज एक बार फिर से ट्राई करके देख सकते थे, उनको शायद दूसरा गोल भी मिल जाता, क्योंकि इस जगह पे
एक्स्ट्रा ये जो रन था थोड़ा सा आगे गए एंड उसके बाद जाके पास दिया, जिसकी वजह से इधर गोल आता हुआ दिखा। और ये फाइनल गोल, वो ये तो चुम्मा था। I mean, you could see that the curl in the ball, you could literally sense that goal happening there, and Yeah. it indeed did. And Rudulit from that position, he does not miss. It's a 3-1 victory for Odisha FC. So, first game, we saw Genesee FC crushing 8 nets, and then Odisha FC come back in the co op, and this is such a nice improvement from their side. But it all comes down again on the nimble shoulders of Varsi. He's been doing so much of that heavy lifting for his club, and today also seems like he's well prepared. Has got that steely demeanor you could see from that picture, and then it's our cutie Vagya. And Vagya, we know he had that little bad spell going on, but lately he has recovered. He's been winning games, he's been winning matches for his team, he's been scoring those winners, and you could see he's one of those players who's really passionate about the game. Every single time he scores, he celebrates, and does not matter what the in-game celebration goes on. Bhagya has a Yeah. different expression, and that's why we love him. And you need players like that in the ecosystem. Somebody who play this game for fun, for the passion and the love for this beautiful sport. But now, coming down to breaking down between these two players, Varsi has won those big matches. Varsi has been there in these situations multiple times when he's been up against the Titans, and he's faced them and he's slashed through, cut them, ripped them apart. But when it's Vagya, I think he brings in that little element of surprise, because it's so difficult to really, kind of evaluate what Odisha FC are going to be putting on the table, which was quite similar to the co-op game that we saw. We never saw those two first and third goals really coming, right? The first goal coming out of corner, the third goal was something that I honestly did not expect, nor neither did anybody else. So I think Varsi has to be prepared for that. जी हाँ, वार्सी को प्रिपेयर रहना होगा एंड सेम जगह पे वाग्या भी इधर प्रिपेयर रहेंगे, क्योंकि वार्सी अभी तक हैदराबाद एफसी की तरफ से जितने भी क्लचेस है वो वार्सी नहीं निकाला है। सो वो क्लच मशीन कहने की कह सकते हैं, जो कि आखिरी मोमेंट पे जाके 2 गोल्स करके 3 गोल्स करके वापसी कराते हैं अपनी टीम को एंड उसके बाद जीत के भी लेके चले जाते हैं। तो कमबैक राजा अगर किसी को कहा जा सके इस पूरे eISL सीजन 2 के अंदर, वो वार्सी जरूर हो सकते हैं। तो उस जगह से वाग्या को भी इधर कोशिश करना होगा कि अगर वो पहले गोल स्कोर भी कर दे, क्योंकि जो यूजुअली होता है कि वार्सी पहले थोड़ा बहुत गोल कंसीड कर लेते हैं, देन जाके उनका गेम बाहर निकल के आता है। अगर वाग्या इधर से गोल स्कोर कर भी देते हैं, फिर भी वाग्या को थोड़ा जो है वो फोकस रहना होगा एंड बहुत ही ज्यादा चौकन्ने रहने की जरूरत है, क्योंकि वार्सी कोई भी जगह से फिर से हल्ला बोल सकते हैं एंड कम बैक उनके तरफ से हो सकता है जरूर। सो ये होने वाला है डिसाइडर। जिस तरीके से शुरुआत हुआ था, लगा नहीं था वैसे कि डिसाइडर इस लेवल पे जाएगा, क्योंकि नेट्स का उतना खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, फॉर्म थोड़ा डाउन चला पहले गेम के हिसाब से अगर देखा जाए। फिर उसके बाद आके कोऑप पे इतना ज्यादा वंडर्स करके जाएंगे और वो भी इतने स्टाइलिश गोल के साथ, वो तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Yeah, I think none of us really expected that to happen in a co-op, because Odisha FC co-op hasn't been their strongest suit, to be honest, right? And Yeah. I think they went back. We almost had a week plus break, and they utilized that. They did grind a lot, and the results are pretty much visible. They're coming up with something new, and this is fine. I think Nate, it's kind of a little disheartening that he had to take that L over there, but it's fine. I mean, as long as they recovered in the co-op, and now it's time to see how much have these lads improved. I mean, we've seen Varsi, he's been streaming a lot of his games, those weekend showdowns, we've seen that all. But for Vagya, let's see, what has he got? What tricks does he have under his sleeves to deal with mighty Varsi? Because Varsi as a player, like you can see from left to right in yellow, he's kind of trying to take a page out of Vagya's book maybe. But this time he was kind of, Vagya was prepared as Odisha FC from right to left in their black kits. At this point, TT, the first goal is going to be really crucial. And I want to see how they score this one. Because Varsi, we know, he's got that composure, especially in that final third. He goes in, he does not panic. Even in those 1v1 situations, Varsi has barely missed any chances against the keeper, even if he's charging. And at this point, wow, what a pass! But, Oof. It was too close, by the way. बट फाइनली कहने की कह सकते हैं कि जो चार्ज है, जो स्पार्क है, वो दिख रहा है वाग्या की तरफ से।
लेकिन उसी के जस्ट बीच में वॉर्सी धीरे धीरे करके ना पहला अटैक जो है वो बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। फिर टुवर्ड्स आर्सेनियो, रोड होलिप, मौका एंड जगह दोनों ही बन चुका है और फिनिश भी कर चुके हैं। वॉर्सी लाजवाब गेम प्ले, लाजवाब बिल्ड, और जिस तरीके से उन्होंने एक प्लेस के ऊपर खेले रह के राइट लेफ्ट किया, जिसकी वजह से पूरे डिफेंस को इधर हिला के रख दिया उड़ीसा एफसी के। एंड वाग्या सिर्फ इधर वॉर्सी के ट्यून्स पे डांस करते रह गए और फाइनली इधर फिनिश होता हुआ दिखा। पहला गोल वॉर्सी का शुरुआत बहुत अच्छा रहा है और हैदराबाद एफसी एंड हैदराबाद वासियों, फाइनली आपका जो टीम है वो वापसी आ चुका है और ऑब्वियसली कमबैक किंग कहीं ना कहीं अभी डोमिनेट करना शुरू कर चुका है। Yeah, and you know, this is what I was kind of worried about for Wagya, right? Because Varsi, he's one of those players who's kind of holds on to his nerves in those situations, right? Even Wagya had a very beautiful chance just a couple of moments ago, and he kind of bottled it, right? He could have directly gone for a shot, but instead going for that extra pass, was defended. But for Varsi, that composure is much needed for a player. You know, when you're playing a high-stakes game, when Hyderabad FC knows how important this victory is going to be, and you would exactly want Varsi to be representing you in that point. And he's given them that lead, but now Bhagya trying to exercise his luck. Little nice heel to heel, and there he takes a shot with R9, and he will score. And Varsi is taken a beating there. And this one, we could see Hyderabad FC had their defenses a little loose, and beautiful skills coming out from Bhagya, ensuring that he scores a goal. A beautiful elastic also towards the end. Just goes in through, takes a shot, and yes, it is the new trophy titan, R9. And if this card wasn't already broken. आई थिंक इसके पहले भी जितने कार्ड से सबके सब ब्रोकन थे और ये तो टूट फूट के निकल ही चुका है। 97, आई थिंक इवन 94 का भी एक रोनाल्डो आता था जिसका भी पावर बहुत ज्यादा था। Yeah, I think उसके बाद 96 एंड या एंड अभी 97। दिन ब दिन गोलकीपर्स के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है क्योंकि पहले वो नहीं पकड़ पाते थे, अभी और नहीं पकड़ पाएंगे। Oh, this is such an open goal, and he shoots and he scores. This is a gift. Bhagya just giving this goal away on a silver platter, and Varsi says, "Sit down, thank you, Bhagya. You can't afford to make mistakes like that, TT." वाग्या इतना शानदार एक को जाने के बाद कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि ये मैच तो नहीं हारना है क्योंकि ऑलरेडी इनका परफॉर्मेंस एंड ये पूरा सीजन जो है वो शुरुआत से उतना खास रहा नहीं है। इस बार एक गोल्डन चांस है जीतने का। वैसे हालांकि बहुत टाइम बाकी है इस गेम के अंदर, कमबैक हो सकता है, जीत भी सकते हैं इवन, बट जो गोल वो कंसीड कर रहे हैं इस तरीके के गोल वो कंसीड नहीं करना चाहेंगे बाद में। बट मार्टिनी फाइनली द सेवियर, अगर थोड़ा भी राइट लेफ्ट होता इधर रोनाल्डो बॉल लेके निकल सकते थे, बट बहुत शानदार एक का डिफेंस उनके तरफ से उधर देखने के लिए मिला धीरे धीरे करके। पर फिर से बिल्ड होता हुआ वॉर्सी आज काउंटर पे नहीं, लॉन्ग बॉल्स पे ज्यादा नहीं, वो आज बहुत ही ज्यादा छोटे पास पे, जो हम लोग कह सकते हैं टिपिकल टिकी टाका द स्पेनिश फुटबॉल अपने एकदम टॉप लेवल पे चलता हुआ वही चीज कर रहे थे। लेकिन उसी के बीच में बॉल गया आउट ऑफ कंट्रोल, बट वन डाइक इधर नहीं अलाउ करने वाले हैं रोनाल्डो को आगे जाने से। Yeah, I think Wagya has been doing a lot of that. Those driven passes, those driven throughs, those lob throughs. He's been trying to test the waters. But again, Varsi on his attack with Ruud Gullit. Passes on towards Mbappe before he could take the shot. Van der Sar just charges in, steals the ball away. And at this point, you know, at this junction, we're not even, just approaching close to the first half. But such an exciting game, right? Both these teams. It's not like Wagya is just letting Varsi control the flow of the game, right? Wagya has also been creating chances, and that goal he had scored was beautiful, spectacular, just to cancel everything out with the gift that he gave Varsi. And if you give chances like that to a player like Varsi, you know what he does, right? And this one just had that not been offside, then we know what would have happened.
Yeah. Oh, Sasinio. फाइनली कहने की सर बॉल रोका गया, सैनिटी इंसिडेंट से छीना गया था, लेकिन इस बार बीचों बीच रोनाल्डो एंड वैंडेसार ज्यादा दूर नहीं रख पाए थे बॉल को, जिसके वजह से सेव हो गया, बट खतरा टला नहीं है। कोशिश था बाईसाइकिल की, लेकिन वो होने नहीं दिए। बॉल पहुंचने से पहले इंटरसेप्ट हो गया था। एंड एक बार फिर से देखिए, वॉर्सी के लिए अभी बहुत टाइम है, वॉर्सी अभी आगे भी है, तो वॉर्सी ध्यान से थोड़ा स्लो डाउन करना चाहेंगे गेम को, और स्लो डाउन अगर करेंगे वो वाग्या के लिए जो है वो गलत, मतलब थोड़ा मुश्किल हो सकता है बाद में फिर से एक बार फ्लो पे वापस आने पे। तो देखते हैं वाग्या कितना ज़्यादा पेस पे गेम को चला पाते हैं, क्योंकि जितना पेस वो मेंटेन करेंगे उतना ही जल्दी जल्दी उनका काउंटर भी आएगा। All right, so we can see Vieira being brought up the new card again. Trophy Titans, but for now, Jairzinho, nice cross on towards Mbappe, and he will try to build a little bit of a space with R9, takes the shot, but nice, just, you know, stretching his legs through, and Virgil van Dijk making a crucial defense there, and will save Odisha FC from another blow. As you can see, you know, it's still anybody's game, right? If you take a look, both these players have taken 3 and 2 shots respectively, and the expected goals are also there. Odisha FC, like you said, a little bit of that Spanish football from both these sides. You know, rather Vagya has been opting more for those driven passes and those lob throughs, but Varsi, I think he's been controlling the midfield exceptionally well, and every single chance he gets it, he goes for it. And quite an evenly contested game, TT, to be honest, at this point. And Vagya needs to find a way out, because Hyderabad FC could still be kind of a little happy with a draw. I mean, content. Let's not say happy, content with a draw. But Odisha FC, they desperately need the win to stay in, stay breathing in just to try and qualify for the playoffs. But as the second half has commenced, Odisha FC, they were seeming like they would take over, but that doesn't happen. बट देखिए, हैदराबाद एफसी के लिए भी कुछ खास होगा नहीं अगर वो ड्रॉ ही लाइक करके जाए इधर से, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा जो उनको शायद हेल्प नहीं करेगा उतना ज़्यादा, क्योंकि अभी जो टॉप के टीम्स हैं उनमें से 2 टीम्स ऐसे हैं जिनके सिर्फ शायद 6 मैचेस हुए हैं, जिनके 4 गेम्स अभी भी बाकी हैं, तो उनके पास तो बहुत सारे मौके हैं, और ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे बैठे हैं मुंबई सिटी एफसी जो 4th प्लेस पे है, तो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड ओडिशा एफसी के लिए भी इस गेम को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एज ऑफ नाउ, रोड होली टू कैप्टन विया वर्जिल वैन डाइक, और बॉल अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं ओडिशा एफसी, और उनको रखना भी होगा, क्योंकि अगर वो बॉल कंट्रोल खो देते हैं देन उसके बाद जो अटैक वो बना रहे थे वो पूरा ही विफल हो जाएगा। तो कोशिश यही है, लेफ्ट हैंड साइड से ऑलरेडी आ चुके हैं, क्रॉस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला आज के दिन पे ओडिशा की तरफ से, बट इस बार क्रॉस नहीं, इस बार एक कॉर्नर। ओह, कॉर्नर नहीं था ये, बैक लाइन के बाहर बॉल गया, शायद हैदराबाद एफसी के पैर पे लग के मोस्टली, तो इधर कॉर्नर तो नहीं मिला, बट या इधर एक गोल किक जरूर मिलेगा। Yeah, I think now at this point, I'm not going to expect a lot of substitutes to be made, but I think a little bit changes in the tactics or maybe in the formations for Havagya. He needs to do something. He needs to find a crack in Varsi's defenses. And I think, like you said, he's been playing those long balls really well. He's been trying to pierce through Varsi's defense. On few occasions, he succeeded. In the final third, something goes awry, something goes wrong. But now, Vagya, I think at this point, you know, he would start applying constant pressure, a little bit of PAPL also, and then we might see him trying to dominate there. But at that point, you know, this is the impasse where Varsi is, where he has to make that decision. Does he play ultra defensive like he's playing right now, or does he score one more and have that little bit of an extra cushion? As you can see, Varsi, in fact, making few substitutes there, getting Ronaldinho up instead of Jarzinho, which kind of shows that yes, he wants a fresh new leg and he also wants to score some goals. And that being said, we have to see if he can find a way through. And this looks like a promising build-up. R9 wanted to give it maybe towards Vieira there, but eventually Vieira was just offside. As a result, Vagya has taken the possession away. Yeah, and Bhagya
उनको अभी अपने पास पोजीशन रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ पोजीशन ही नहीं, इधर गोल भी स्कोर करने होंगे, वो भी 2। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, टाइम भी ज़्यादा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट के आसपास टाइम बचा हुआ रहेगा। ओ ओह माय गॉड! हकीमी जिस तरीके से इधर ये चैलेंज किए हैं, उससे एक चीज़ तो पता चल रहा है कि सिर्फ वो अटैक में नहीं, वो डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वैसे वो तो पहले से ही थे, लेकिन दिखा आज। Oh, now at the TT at this point, Varsi, it's very important that he scores a goal. He's found that room, and indeed he does. Indeed he does. And finally, you can see that huge sigh of relief from Varsi, and Bhagya just left stranded, lost in his own thoughts. How could he make those mistakes? And at this point, scoring 3 goals for Odisha FC is a very uphill task, and I don't know how they're gonna get through, because Varsi, once he gets control over this game, such an important goal at such an important moment for him, to be honest, because now this opens him up to a lot more options right now. He can go defensive, he can go for a 5-4-1 also, that he can do, and it's going to be oh so difficult for Vagya to pierce through Varsi's defense. Yeah. आई थिंक जितने भी चांसेस थे वो अभी धीरे धीरे करके सब चांसेस के जो डोर्स है उस पे ताला लग चुका है, और वो जो चाबी है वो भी अभी घूम चुका है, क्योंकि एक गोल के बाद से और गोल्स आए नहीं है वाग्या की तरफ से। और वाग्या की अगर बात किया जाए, वो जब जब बॉल जीत भी रहे, वो सबसे ज्यादा लाइक एकदम जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से थोड़ा आगे तक पहुंच रही है, बट उसके बाद और वो अटैक जो है वो बिल्ड हो नहीं पा रहा। तो मुश्किल लग रहा है, इधर से ड्रॉ निकालना भी बहुत टफ है, बट बेलिंगम को लेके आया जाएगा, फर्नांडेज आएंगे, एंड उसी के साथ साथ और कोई चेंजेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड हम लोग को ओडिशा एफसी की तरफ से हलांड आता हुआ दिखेगा डिब्रानिया की जगह पे। सो अभी चेंज हुआ पूरा फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली, तो अभी 4 अटैकर्स के साथ जाने वाले हैं, 4 फॉरवर्ड्स के साथ इधर ओडिशा एफसी जाएंगे, एक मिडफील्डर को बाहर निकाला गया। सो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था वैसे तो, अभी अटैक की ज़रूरत है, और देखते हैं हलांड आने के बाद क्या कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है इस पूरे गेम के ऊपर। Yeah, I mean, at this point, it's going to be really crucial to see what changes are going to be made. A few have been made from Varsi's side, and also from Vagya, where he's got to go all out for an attack. I mean, has to throw the entire kitchen sink, to be honest. And at this point, it's so difficult. But if the ball gets stolen like this, he has to score. Vagya cannot afford to mess it up, but he does. He does. And there you can see, with every single passing second, Odisha FC's hopes of making it to the playoffs seem to diminish. It's looking really bleak, and only a miracle, only something out of the Pandora's box, a thing called hope, can save them. And now this is a good chance. Oh, the effort was right, but still opened, and he scores with Erling Haaland. A very scrappy one, but at this point, all right, the Magidi celebration coming up. But Odisha FC seems like they're not just out of the game yet. One more quick goal, and we could see the pressure being built up. There you could see, Varsi's gone for a 5-4-1 already. And what changes does he make at this point? वैसे देखिए, इस गोल के अंदर गलती तो बहुत सारा था वार्सी की तरफ से। वैसे ये गलती भी नहीं कहेंगे, बहुत बार हो जाता है ऑटोमेटिकली, या आपके 2-3 प्लेयर एक जगह पे आ जाता है, फिर एक के बॉडी पे डिफ्लेक्शन लग के, दूसरे बॉडी पे लग के, फिर तीसरी जगह पे चला जाता है, तो कुछ वैसा हुआ। और इधर जाके वाग्या उनके साथ दे रहा है, उससे उसका तो एक प्रूफ हम लोग को मिल चुका है कि इधर बॉल जाके कहीं भी जा सकता था, लेकिन गया हालैंड के पैर पे ही। और उसके बाद हालैंड टीम ऑफ द ईयर कार्ड, 96 रेटिंग, कौन रोकेगा इनको, और वो भी इतने क्लोज से। तो या और कोई रोकने का मौका था ही नहीं, बट इस बार आएगा वॉर्सी की तरफ से भी हालैंड यूसेबियो की जगह पे, और देखते हैं कि किस तरीके से गोल करेंगे, क्योंकि वॉर्सी कोशिश तो ये करने वाले हैं कि एक गोल के साथ होल्ड अप तो नहीं करेंगे, वो शायद एक और गोल के लिए जाए, लेकिन
उस टाइम पीरियड के ऊपर भी बॉल कंट्रोल अपने पास रखना होगा, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे बॉल इधर छीना गया, बट ट्रांजिशन थोड़ा स्लो होता हुआ, और जिसकी वजह से डिफेंस अपना स्ट्रक्चर फिर से बिल्ड करने में तो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन क्या मौका मिलेगा? व्हाट अ पास! ओह नो! ये होना चाहिए था गोल। Yeah, I mean, this is, you could see, right? He's gone all attack! And he scores! He scores! Oh my goodness! 82nd minute! And another goal for Bhagya! And you could see everybody in the stadium is stunned at this point. I don't know how that came through, but that cross, and oh, he wanted to just thwart it away, but eventually just goes in. And now, TT, we've got a game on our hands. Vagya has become the comeback king right now, and he needs to score one more. He's changed everything for Varsi. Hot. What a comeback! हलैंड आते ही पूरा स्ट्रक्चर, पूरा हुलिया इधर बदलता हुआ देखने के लिए मिला है गेम के, और उसी के साथ वाग्या इधर अपने वाग्या खुद लिखते हुए जिस तरीके से वो इधर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो आगे एक और हो सकता है गोल? हालांकि बॉल जरूर एक लो थ्रू किया गया था, बट डिफेंस सही टाइम पे पोजीशन ले लिए थे। बट वॉर्सी के ऊपर देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है। It's come down to the wire at this point. Vagya, where was this Vagya in the first half? Suddenly looking so threatening, so attacking every single pass he's making. Oh, and you can see that intent, right? Constantly trying to take the ball away. And does Varsi have any more pauses remaining? Because he had made a lot of changes, he had taken his chances. Right now, it's all Vagya all over the place, and there you go, the final whistle gets blown, and nothing separating these two clubs, and it ends in a draw. Both these teams will be sharing points, one each, and Hyderabad FC not really happy with what happened, but Odisha FC will take it, maybe not with a smile, but they know they live to fight for yet another day, which kind of makes things even more difficult from here onwards. With just 2 games remaining, they'll just have to hope. They'll have to be on mercy of the other teams, just hoping that the other clubs kind of lose their games, and they somehow manage to win too. And for Hyderabad FC, little bit of that cushion there, but still, it looks very slim. Yes. And yeah, कहीं ना कहीं अभी भी चांसेस की अगर बात किया जाए तो हैदराबाद एफसी के पास तो है, क्योंकि टॉप 6 पे वो ऑलरेडी बैठे हैं। और उसके बाद एटीके मोहन बगान, केरला ब्लास्टर एफसी, उड़ीसा एफसी, ईस्ट बंगाल के लिए देखिए शायद चांसेस नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 गेम्स खेल चुके हैं, और ये वो गोल्स थे जो कहने की बहुत ज़्यादा लाजवाब देखने के लिए मिला था। देखिए इस जगह पर तो फिर भी ठीक था, एक और गोल आता हुआ दिखा था, जिधर बहुत शानदार फिनिशिंग के साथ हम लोगों को लगा था एटलीस्ट कि ये गेम जो है वो शायद डिसाइड हो चुका है इधर से और कमबैक नहीं आएगा। लेकिन उसी जगह से वाग्या का एक चेंज, डे ब्रुयना को बाहर निकाल के हलैंड को अंदर लेके आना, और उसके बाद हलैंड मैजिक करते हुए दिखे। जस्ट हलैंड के साथ मैजिक होता हुआ दिखा। हो सकता है कि उन्होंने पूरा नहीं किया होगा, उन्होंने बिल्ड नहीं किया होगा हलैंड, लेकिन हलैंड जिधर जा रहे थे बॉल उनके साथ साथ जा रहा था। ये था पहला गोल, और दूसरा गोल भी काइंड ऑफ सिमिलर तरीके का ही हम लोग को देखने के लिए मिला। लेकिन वाग्या के जो थ्रू पासेस थे, जो लॉब थ्रू पासेस थे, वो एकदम ऑन पॉइंट थे। और उससे एक चीज तो वो साबित बता चुके हैं, स्टेटमेंट दे चुके हैं कि आपका डिफेंस जितना भी स्ट्रांग हो ऊपर से बॉल निकाल देंगे। And especially, just after going full attack, right? There we could see the best of Vakya. And this one, you got a kind of feel for Hakimi there. He had good intent, but eventually the job had been done. And it, under such intense pressure,
And the sheer Hmm. decision to go for a cross there and take a shot, applaud to Wagya. He did not crumble, especially considering the fact that he knew if they're losing this game, it's completely lights out. It's done and dusted. Their dreams of making it to the playoffs is practically over, and the next two games would just be for consolation, just for the heck of it, play and get done with it. But now, considering they've gotten themselves up to the seventh position, will be sitting with 6 points, and Hyderabad FC will be getting Hmm. eight. Right. So at this Yeah. point, what Odisha FC would be hoping is that Kerala Blasters, East Bengal, and Jamshedpur, they lose remaining of the fixtures. With Hmm. Jamshedpur still just playing 6 games, and same goes with ATK Mohan Bagan. This is where Hyderabad FC need to start worrying, because if ATK Mohan Bagan wins their Hmm. fixture tonight against Jamshedpur, then that could be a whole different story altogether. जी हाँ, शायद अभी के लिए जो पोजीशन एंड सिचुएशन बन रहा है सिर्फ इधर सिक्स्थ प्लेस के लिए कहीं नहीं कि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद चेन्नई एफसी के साथ गैप काफ़ी ज़्यादा शानदार बन चुका है। Yeah. तो या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीतना, बट आई थिंक जो हमारे एमवीपी हैं वो भी आ जाएंगे बहुत जल्दी। बट इसमें आई डोंट थिंक कि कोई डाउट है कि वो एमवीपी कौन होने वाले हैं। ऑब्वियसली इस गेम का जो एमवीपी है वो हम लोग को देखने के लिए मिल वाले हैं वाग्या। वाओ। Yeah, and I think well deserved, because the question was between Wagya and Genesis. Genesis, of course, had given his team a victory, but if it comes down to a situation, this particular situation where Wagya was literally 2 goals down, and it was almost a closing phase of those games, right? 70 minutes plus, and he was, I think Varsi was 3-1 up, and that is where Wagya just showed sheer determination, sheer grit, and this is what happens, right? And he managed to score a या comeback and a well-deserved MVP, I must say. And at least one thing for sure, we can say that Wagya's, that luck factor has been thrown out of the picture right now. Wagya has been playing really well. I think his defense is something यस that he could work on a little bit more, because that third goal, that Ronaldinho goal, that could have been avoided had a Virgil van Dijk just gotten for the tackle rather than delaying it a little bit more. Maybe he was thinking that he was gonna make an extra skill move over there, and then he's gonna press in for the tackle. But no, that did not happen, and gave Ronaldinho that extra space. So a few chinks there spotted, which Wagya needs to work out. But still, they have those 2 more games remaining, which they are supposed to win. Otherwise, it's pretty much done and dusted. And that being said, folks, we are done with the first matchup for the evening. Next up is going to be an absolute blockbuster. You do not want to miss that, which is going to happen right after this break.